Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, our rights and duties. So let's dive in. Who was the first president of Free India? Lesson view, preamble, fundamental duties, fundamental rights and directive principles. We are going to learn about them. Are you people ready? So let's start. Our country was ruled by the British for almost 200 years, and after a long and hard struggle, India got independence from the British rule on 15th August 1947. As everybody knows कि हमारा almost 200 साल का जो वो पीरियड रहा है, that was very tough period. बच्चों, हमें इतने सालों के बाद हमारी आज़ादी वापस मिली, and that was the day 15th August 1947, and this day is celebrated as Independence Day, and in India it is celebrated every year on this day. Every independent country has its own constitution. जैसे हर country का constitution होता है, हमारा भी constitution है. Constitution is a legal document which has set of rules and regulations. The government runs the country according to these rules and regulations. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. Thus, 26 January is celebrated as Republic Day in India every year. So, बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, that was the day 15 अगस्त 1947. लेकिन जब हमारा संविधान बना था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लाइक हमें जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जब वो बना था तो उस दिन जब अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस डेट को हमारे यहाँ हमारे इंडिया में एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly, and the Constitution of India says that India is a sovereign, secular, socialist, democratic and republic. Let us learn in detail. Sovereign, it means that we are free to run our country in any way we like. And secular, it means that all religions are equally respected. सब religions की को equal respect मिलनी चाहिए. And socialist, it means that all of us will be treated as equals. किसी में भी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होगा. Democratic, it means the government is elected by the people of the country. जो भी हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट की जाएगी लोगों के द्वारा ही. Republic, it means that the country is run by the people, not by the king. कोई भी राजा इस कंट्री को नहीं चलाएगा, यहाँ के लोग ही इस कंट्री को चलाएंगे और लोगों द्वारा ही उनका चुनाव किया जाएगा. Fact file, the Constitution of India is the longest written constitution in the world. Preamble. Preamble is the introduction or the preface of the Constitution. Our preamble states, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, these 26 days of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. Now we talk about fundamental rights. The Constitution of India has given certain rights to every citizen, and these are called fundamental rights. No one can ignore these rights. Some of them are follows, जो कि नीचे लिखे गए हैं, अभी मैं रीड करके आपको बताती हूँ. Number 1, it's right to equality. Everyone is equal whether rich or poor or belonging to any religion. So हर कोई एक जैसा है, किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी गरीब हो, किसी भी तबके का हो, गरीब या अमीर, सबको एक समान ही माना जाएगा. राइट टू फ्रीडम, एवरी citizen has the right to express his or her views or ideas. Right to justice, every citizen would be heard in the court of law.
and right to follow the religion of choice. Every citizen has the right to follow any religion and visit any place of worship. कि अगर हम लोग हिंदू हैं तो हम मस्जिद में नहीं जा सकते, अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम लोग गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है. कोई भी किसी भी जगह पर जा सकता है, किसी भी धार्मिक जगह पर जा सकता है, विजिट कर सकता है, और कोई भी सिटीज़न कोई भी धर्म को अपना सकता है. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन फॉर फ्री टिल द एज ऑफ 14. Right of constitutional remedies. It empowers the citizens to move a court of law in case of any denial of the fundamental rights. For instance, in case of imprisonment, the citizen can ask the court to see if it is according to the provisions of the law of the country. Yes, कोई भी लाइक हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे राइट्स जो आपने अभी रीड की, अभी आपने सुने हैं, मैंने आपके लिए रीड किए हैं. उन राइट्स के द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे संविधान में किस किस तरह के अधिकार हमें दिए गए हैं. राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीड यू. जब अधिकार हमारे पास होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी हमें दिए जाते हैं. अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं, मुझे किसी चीज़ का राइट दिया गया है किसी काम का करने का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आ जाती है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारी, लेट्स रीड अबाउट. As we are given rights, the Constitution also provides a list of fundamental duties for every citizen of India. Rights and duties together do go together, and some of them are: follow the ideals given in the Constitution, respect the national flag and national anthem, work for the unity of our country, cooperate with the government in times of difficulty, protect and improve our natural environment, and protect the monuments and public property, treat others एज आर इक्वल्स. जब हमें राइट है कि हमें इक्वल समझा जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है हम भी सबको इक्वल समझे, हम भी अपने देश की प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, मोन्यूमेंट्स को बहुत सहज के संभाल के रखें, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, इसके लिए भी हमें सजगता बनाए रखनी है. तो बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, ऐसे अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं. Directive principles. The Constitution of India has also given some guidelines to the Government of India. These guidelines are called as directive principles of state policy. These are for the welfare of the people, and the Constitution direct the government to provide proper living conditions, provide work for everyone, ensure that some people do not become rich by exploiting others. किसी को भी ये इंश्योर किया जाता है किसी को एक्सप्लोट करके कोई भी रिच नहीं, अमीर नहीं बन सकता. राइट. प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल. यस, सभी को एजुकेशन यानी शिक्षा दी जाएगी, ये कंपल्सरी है और फ्री भी है शिक्षा. प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है. ट्राई दिस. व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटरशिप? Glossary. Preface. A written introduction that explains the purpose of writing it. Constitution. Rules and regulations to run the government. Democracy. A system of government where those in power are freely elected by the people they govern. Quick recall. Every independent country has its own constitution. 26 January is celebrated as Republic Day in India every year. Secular means that all the religions are equally respected. The Constitution of India has given certain rights to every citizen. Rights and duties go together. The Constitution of India has also given some guidelines to the Government of India. Practice time, bachcho. So let's start the exercises. Take the correct option. Our country got its independence on 15th August 1947. Right, bachcho. So do likewise all. You have to match the dates with the, suppose Independence Day is there, so it is matching by 15th August, and likewise you have to match all. Write in one word a legal document which has a set of rules and regulations. So one word you have to give, Constitution. Right, bachcho. Do likewise all. Answer the following questions. These are the questions which are this kind of the answers of these questions, the information is given in your chapter. What you have to do, you have to just pick the answer from your chapter and write in your notebook. If you get any problem,
If you face any kind of problem, just get the help of chapter, read the chapter once again, like what is the constitution, why did India called a sovereign state. So such kind of answers, all the information is given in your chapter. Creative Bab, what's with the changing world and trends, do you think that Indian constitution needs some changes? And should it be a little futuristic, and state with examples. Subject enrichment, find out the names of those leaders who have framed the Constitution of India. Make a list of some rights and duties for the children of your class, your siblings. So आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक लिस्ट बनानी है, लाइक पर्सन्स जो लीडर्स हैं जिन्होंने फ्रेम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको, उनका नेम फाइंड आउट करना है, और आपको कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ की लिस्ट बनानी है जो चिल्ड्रन हैं आपके क्लास के, जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके लिए, राइट. Subject interlinking, make a list of any 5 countries that have a democratic constitution. Values, we should follow our fundamental duties which are an essential part in the progress of our country. So आपको कुछ ऐसी fundamental duties जो कि बहुत ज़रूरी हैं उन्हें follow करना चाहिए, जो हमारे देश की progress के लिए बहुत ज़रूरी है. Reach to teach, explain the meaning of the national goals and the difference between the fundamental rights, duties and directive principles of state policy. ओके, सो आपको ये कुछ नेशनल गोल्स को कलेक्ट करते हुए इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, क्लास में एक्सप्लेन करना है, राइट. सो व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, हैव फन, एंजॉय.